Hello, welcome to Krishi Jagran Business. You're watching latest agribusiness news. Don't miss agriculture general knowledge quiz at the end. Let's take a look at today's top news headlines. Sid Farms launches A2 Desi cow milk. Amul Mother Dairy hike milk prices by 2 rupees per litre. Bharat Certes AgriScience MD Dharmesh Gupta visits Krishi Jagran. Aadhaar is must to avail government subsidies and benefits. Matix launches novel organic manure. Advanta seeds ready to come on e-commerce platform. Now the news in detail. Sid Farm, a premium D2C dairy brand, has launched A2 Desi cow milk for its customers in Hyderabad on the auspicious occasion of India's 75th Independence Day. Due to high customer demand of A2 milk, the company made pre-booking available for within the first 6 hours of pre-booking. The company has received an overwhelming response within 400 customers pre-booking for more than 350 litres. Sid Farms has kept a competitive price for their latest product edition at Rs 75 per packet of 500 ml. Dr. Kishore Indukari, founder Sid Farms, said, "We are elated to launch Sid Farms A2 Desi cow milk, and there couldn't have been a better time for us to introduce such premium quality, a higher demand product that has a prominently available in the Western markets." Amul announced the price hike of Rs 2 per litre for its retail pouch milk across the country. This step was followed by other players like Mother Dairy, who also revised its milk prices. The increase of Rs 2 per litre, Amul said in the statement, translates into 4% increases in maximum retail price, which is lower than average food inflation. Bharat Certes AgriScience MD Bharat Gupta visited Krishi Jagran Media House at New Delhi for the KJ Chopal session. During his interaction with the young and dynamic Krishi Jagran team, Dharmesh Gupta highlighted company's vision, various CSR activities, and also talked about the burning agricultural issues such as climate change affecting agriculture productivity. जो CSR का जो इनिशिएटिव है हमारा, तो उसके तहत भी हमारी टीम काफ़ी काम करती है और उसमें हमने मध्य प्रदेश और हरियाणा में कुछ गांव जो ऐसे हैं जिनको हमने अडॉप्ट किया है और उन गांव के अंदर हमारी जो टीम है वो कई तरह के काम करती है, जिसमें हम वहाँ के जो ग्राम निवासी हैं उनकी हेल्थ के ऊपर हम काम करते हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में उनको हम सपोर्ट करते हैं और फार्मर के साथ मिलके उनकी हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी हम काम करते हैं। और उसमें हमारा जो उद्देश्य है कि हर साल हम कुछ गांव और जोड़ते जाएं और जो एक्टिविटी अभी हम आज कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और एक्टिविटी हर साल हम जोड़ते रहें। जो पिछले 2 साल जैसे कोविड का समय रहा, तो इसी साल ज़्यादातर स्कूल खुले हैं, तो इसी साल अप्रैल में ही हमने लगभग 10,000 स्कूल बैग विद बुक्स बच्चों को हमने इन जो गाँव हैं वहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और इस बार हम कुछ अच्छे और जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ हम स्कॉलरशिप का भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो आज की डेट में, अभी पिछले दिनों ही न्यूज़ पब्लिश हुआ है कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए का ट्रेड सरप्लस एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जिस तरह से पिछले 3-4 वर्षों में चाइना के अंदर परिस्थितियाँ डेवलप हुई हैं, खास करके वहाँ के एनवायरनमेंट को लेके या उनका जो भी वैश्विक स्तर पे खास करके अमेरिका के साथ जिस तरह से ट्रेड बैरियर लगे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनीज, स्पेशली द जापानीज मैन्युफैक्चरर, दे आर लुकिंग एट नाउ चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, क्योंकि सबको लगता है कि वी शुड हैव वन मोर ऑप्शन। और इसलिए बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इंडिया के अंदर लेबर की अवेलेबिलिटी अभी तक अच्छी है, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी कंपनीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। उसी का नतीजा है कि बहुत सारी कंपनियां एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इंडिया में इन्वेस्ट भी कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मेक इन इंडिया को अगर सच में मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को एक बड़े स्तर पे आगे लाना होगा।
और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होगा। The Unique Identification Authority of India has made it mandatory to have an Aadhaar card number or its enrollment slip for availing government subsidies and benefits. The decision was announced by UIDAI in a circular issued on 11th August. As per Section 7 of the Aadhaar Card Act, a person who hasn't been assigned an Aadhaar card number shall be offered alternate and valuable means of identification for delivering of subsidy or benefit or service. Matix launches a novel organic manure in the market. This is their another initiative to provide farmers a wide range of agri inputs. And on the other hand, Matix flagged off first truck of Dr. Fasal Zyme by the company's managing director Manoj Mishra. On the auspicious occasion of 75th Independence Day, Advanta Seeds, the fastest growing seeds company in India, is all set to make its presence felt on the e-commerce platform. The company is working with plans to go live for the direct-to-customer platform. Advanta Seeds will be one of the pioneers in the seed business with an aim to reach out its customers through online media. The Punjab government has suspended the use of 10 pesticides for 60 days in the state to ensure that basmati rice exported from the country does not have excess pesticide residue. But the move has drawn criticism for some quarters. According to the Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, the government is focusing on technology and infrastructure development in the agriculture sector. This will create employment opportunities for the educated youth in the villages. Tomar believes that this will not only create employment opportunities but also benefit the farmers and find sustainable solutions, enrich the growers and modernize agriculture. Keeping in line with its promise of spreading awareness among farmers about the latest farming trends, Gram Unnati, India's first integrated agri-tech solution company, organized a one-day training program on pest and diseases management for soybean farmers, along with Krishi Vigyan Kendra in Baran, Rajasthan. With the support and guidance of DS Pysico Private Limited, this project will help 1,000 farmers build capacity. Gram Unnati is also enabling 15 farmers to establish demonstration plots of soybean, where scientifically recommended good agriculture practices are being adhered to. Now let's take a look at Agriculture General Knowledge Quiz, where you can win discounted coupons of FTB Organic, which is Farmer the Brand Organic. How many states are there in India? A. 28, B. 29, C. 30, D. 32. Do let us know your answers on the number 8800023204. We'll wait for your answers. Till then, keep watching Krishi Jagran Agribusiness. Thank you.